Good morning, everyone. Welcome to CG Vision for You classes. Today's topic is agrivoltaics, or we can say that agrovoltaics. Both are same. Agrivoltaics is the practice of using the same land for both agriculture and solar energy generation. Here we can see that we are using the same land for multiple crops and for agriculture and the solar energy generation. So the key benefits of agrivoltaics is it's maximize the land efficiency, reduce water retention, and most of the countries are using this method. This method is initiated by Japan in 2003. After that, most of the countries are applying this method and working on this method, like US, UK, Russia are the leading countries. Those who are using this agrivoltaics method, because it's maximize the land efficiency and reduce the water retention, and the plants also get the shades, the plants are getting shades of solar energy, because it's improve the evaporation method and reduce water usage. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है इसको, और फोटोवोल्टेइक बिजली पीवी उत्पादन और कृषि को एकीकृत करता है. अब अक्सर सौर पैनल के नीचे जो भी है क्रॉप को लगाया जाता है. एंड एग्रीवोल्टेक्स is a sustainable practice that combines agriculture and solar energy production on the same land. This approach involves installing solar panels above crops, allowing for dual land use. The key benefit of this agrivoltaics method is the sustainable practice and renewable energy. We can using the same land for a dual purpose, right? So एग्रोवोल्टेक्स एक सतत प्रथा है जिसमें कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन को एक ही भूमि पर संयोजित किया जाता है. इस प्रक्रिया में फसलों के ऊपर सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे खाद्य ऊर्जा का उत्पादन एक साथ हो सकता है. If we talk about the major benefits, land efficiency, shade of crops, the crops are getting shades of the panels, which may help reduce water evaporation and improve crop resilience on hot climates. जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो प्लांट्स को वाटर का जो प्रोसेस है, जो उनको एवापोरेशन के लिए जितना ज़्यादा पानी लगता है प्लांट्स को, तो प्लांट इस सोलर पैनल के शेड से थोड़ा कम लगने लगता है. और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भूमि की कुशलता, भूमि के उपयोग को अधिकतम करता है, जिससे फसल और ऊर्जा दोनों का उत्पादन संभव है. अगला की बेनिफिट है एनर्जी प्रोडक्शन, जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग रिलायंस on fossil fuels and lowering greenhouse gas emission. So here it is the major key benefits if we talk about the greenhouse gas emission, because it releases carbon and other gases in the environment and it can affect greenhouse. Okay, so ऊर्जा उत्पादन नवीकरण ऊर्जा उत्पादन करता है, जो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाता है. Another key benefits is economic diversification. Farmers can diversify income streams by selling electricity in addition to crops. आर्थिक विविधीकरण, किसान बिजली बेचकर आय के नए स्रोत को विकसित कर सकते हैं, इसके साथ ही फसलों की बिक्री भी कर सकते हैं. Reduce water stress. So if we talk about the economically, the farmers are selling electricity and addition to crops. So on the same land, dual purpose, it can increase the income of the farmers. Okay. Other benefits is reduced water stress. In some cases it can lead to better water retention in the soil. पानी की कमी में कमी, कुछ मामलों में यह मिट्टी में बेहतर पानी संरक्षण का कारण बन सकता है. एग्रोवोल्टेक्स खाद्य सुरक्षा और नवीकरण ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में तेजी से ध्यान आकर्षित कर रहा है, साथ ही सतत भूमि प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रहा है. Here we can see that it's a graphic image how it works. Here are some multiple crops. The farmers are using this method with the solar panel. Solar panels is applied above the crops, so it can reduce water retention and maximize the land efficiency. These are the key benefits, and economically the farmers will get stronger. Okay, they will become stronger economically because they are selling the same time as the electricity and reducing water retention. If they need for water
any generation or water, the water duties, like they need water so they can produce electricity and increase the maximum efficiency of a crop and the land. So these are the key benefits, and hope you understand what is agrivoltaics, how it works, because in upcoming exams might they will ask, because this is a this method is using most of the countries, and it's a hot topic. Thank you for watching.